Good evening, friends. Welcome to Ecoholics YouTube channel. My name is Avinash Agarwal, and in this video, I'll be discussing with you important economics current affairs for 6th August 2024. So, I owe a little bit of an explanation to all of you guys because I have not been very regular in my lectures, so I need to explain what happened. So today in the morning, I took the entire lecture, but then towards the end of the lecture, I realized, while ending the lecture, I realized that मैंने lecture live नहीं करा था. So effectively, I took the entire session. It's just that I was speaking with myself and nobody else was there in the session. Okay, so that was problem number one for today. Yesterday, I was facing some hardware issues. All in all, I'm extremely sorry for the discomfort that I have caused you guys. That is why I have scheduled this lecture at 10 p.m. in the evening. I want to make sure that हमारी continuity maintained रहे, कोई भी gap नहीं आएगा. Ecoholics की तरफ से, मेरी तरफ से, we are 100% committed towards your preparation. We are there with you through and through. Current affairs हम daily basis पे आपके साथ discuss कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. आज के जो हमारे topics हैं, they are very good topics, very relevant topics, right? Let me introduce my topics for today. So, two topics or two questions or two articles are related to whether or not we should include food into our inflation targeting framework, right? So ये economic survey के अंदर suggest करा गया था that we should drop food items out of our inflation basket which is being used for inflation targeting framework. तो क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? That is what the debate is. So the two questions are: discuss the implications of excluding food prices from inflation target, considering its influence on inflation expectations and second round effects as highlighted by economic survey and RBI studies. So this is question number one. Question number two: evaluate the necessity of modifying inflation targeting in India, considering unique drivers of price instability, and discuss potential implications of focusing on core versus retail inflation. ये जो दो आर्टिकल्स का मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा, ये देखने के बाद, समझने के बाद आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई भी नया आर्टिकल या कुछ भी और पढ़ने की रिक्वायरमेंट खास नहीं रहेगी. आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों वी आर सेइंग दैट वी शुड ड्रॉप फूड आइटम्स आउट ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क वाला बास्केट, क्यों वी शुड नॉट डू दिस, राइट, एंड व्हाट इज द वे अहेड. आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा. माय थर्ड आर्टिकल इज अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे. So इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक आइडिया दी गई थी कि वी शुड अट्रैक्ट एफडीआई फ्रॉम चाइना रादर देन इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम चाइना. वी शुड अट्रैक्ट एफडीआई फ्रॉम चाइना और इंडिया के अंदर ही हमारे को जो है सामान को प्रोड्यूस कर लेना चाहिए, राइट. सो दिस वाज अ सजेशन. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज दैट वी वांट टू एनालाइज द इम्पैक्ट, राइट, ऑफ एफडीआई फ्रॉम चाइना on India's investment landscape and economic growth, and what can be the potential benefits and risks of attracting FDI from China into India. That is the agenda of the third article over here. I hope that this is very very clear कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. Now without any further ado, let us begin with our discussion. ठीक है. So why inflation targets minus food won't work. तो आपको आर्टिकल की हेडलाइन से ही समझ में आ रहा है कि आर्टिकल आपको क्या बताने वाला है. So in the first part of the article, we will discuss all the possible logical reasons in support of dropping food out of inflation basket when we are using it for inflation targeting framework, and in the second half of the article we will see all the reasons why we should not do it that. ठीक है. So देखिए, इंडिया के अंदर आप चाहे जितनी स्ट्रिंजेंट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई कर दो, इंडिया के अंदर फूड प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आए हैं हाल फिलहाल में. इन 23-24 हमारा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स सर्ज बाय 7.5%, राइट, and in June quarter of 2024 हमारा consumer food price index had risen to 8.9%, right. इंडिया के अंदर जो फूड प्राइसेस इंक्रीज होते that is more because of supply side reasons. तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके डिमांड को रिड्यूस कर देगी, बट डिमांड रीजन है ही नहीं. आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके डिमांड को रिड्यूस कर दोगे, बट फूड एक ऐसा आइटम है जिसकी डिमांड को आप इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज वो बेसिक आइटम है. फूड का प्राइस इंक्रीज इंडिया के अंदर सप्लाई रीजन की वजह से होता है. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड को कंट्रोल कर सकती है और सप्लाई को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती है. इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर सजेस्टिंग दैट लेट अस एक्सक्लूड फूड प्राइसेस फ्रॉम इन्फ्लेशन टारगेट, राइट. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग व्हाट वी आर सेइंग. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस of excluding food from inflation targeting?
right? So when you exclude food, whatever inflation numbers that you get, trend that you get, data that you get, that is more stable data, more reliable data, more and more dependable data, in the sense that वो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू दिखाएगा. So your volatility is quite reduced. ठीक है. अब अगर आप इंडिया के अंदर recent data को देखेंगे, so you will clearly be able to see that non-food inflation in India is already under control. But it is the food inflation which is pushing headline inflation out of control, right? Or it is food inflation which is pushing headline inflation up. So non-food inflation is very much under control. Based on that, we can reduce the interest rate. Based on that, we can spur demand in the economy. But food inflation is keeping headline inflation up, right? And because of that, जो है हम लोग interest rate कम नहीं कर पा रहे. What is headline inflation? Headline inflation का मतलब ये है, दैट इज इंडिया के अंदर आज के दिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जिसको आरबीआई ध्यान में रख के मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, राइट? तो आज से ऑलमोस्ट 9-10 साल पहले जो है वी यूज्ड टू लुक एट होलसेल प्राइस इंडेक्स व्हाइल मेकिंग आवर मॉनेटरी पॉलिसी. नाउ वी आर लुकिंग एट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड टू मेक आवर मॉनेटरी पॉलिसी. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है उसका भी मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? अब आप देखिए, समझने की कोशिश करिए. ये हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाई वी शुड रिमूव फूड फ्रॉम द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, राइट? एक और रीजन ये है कि फूड एंड बेवरेजेस जो है दे मेकअप अराउंड 46% ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट? बट जो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन भाग रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, राइट? व्हाट इज इन्फ्लेशन? जनरल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस. जनरल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस जो हो रहा है दैट इज इन्फ्लेशन, राइट? सो फूड का जो है मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन है टू जनरल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस. यानी कि फूड भले ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट का केवल 46% है, बट इट इज पंचिंग अबाउट इट्स वेट. 50% से ज्यादा इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर जो है फूड कॉज करवा रहा है, सप्लाई साइड इश्यूज करवा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज करवा रहा है, ये प्रकार के सिचुएशंस करवा रहे हैं जो कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल के बाहर है, राइट? अब वी आर गेटिंग इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द आर्टिकल. सेकेंड हाफ ऑफ द आर्टिकल के अंदर दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई वी शुड नॉट टेक एनी सच स्टेप ऑफ लेट अस से रिड्यूसिंग और रिमूविंग फूड फ्रॉम आवर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है? अब हाउस होल्ड्स जो है, हाउस होल्ड्स दे यूजुअली बिल्ड देयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? दे डू दैट ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट प्राइस ट्रेंड ऑफ डेली यूज आइटम्स. तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं कि वो लोग ये देखते हैं, राइट, कि व्हाट आर द फूड प्राइसेस, व्हाट आर द फ्यूल प्राइसेस, वो डेली बेसिस पे इसको फेस करते हैं, डेली बेसिस पे पे करते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग इन्फ्लेशन दैट इज सेट बाय फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, राइट? तो अगर सपोज हाउस होल्ड्स ने हाई अमाउंट ऑफ पैसा फूड एंड फ्यूल के लिए पे करा है, सो दे विल एक्सपेक्ट दैट काफी अच्छा इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर. इफ दे हैव पेड मॉडरेटली फॉर फूड एंड दे हैव पेड मॉडरेटली फॉर फ्यूल, सो उसी प्रकार से उनके इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस भी एंकर रहेंगे, राइट? सो इफ यू आस्क हाउस होल्ड्स, राइट, कि आपको क्या लगता है इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो दे विल से डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज हैपनिंग इन दीज बास्केट्स, राइट? ओके, फूड एंड फ्यूल. अब देखिए, इंडिया के अंदर अगर फूड प्राइसेस कंटिन्यूअसली हाई रहेंगे, सो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन विल आल्सो बी कंटिन्यूअसली हाई. As a result of which households, right, they will start expecting that prices are increasing quite a bit in India, right? And if households start expecting that prices are increasing quite a bit, then prices will actually start increasing. कैसे? Let us say that households are expecting कि prices will increase, ठीक है? So उसकी वजह से क्या होएगा कि households will demand higher and higher wages. उसकी वजह से क्या होएगा कि the cost of production will go up. If cost of production will go up, उसकी वजह से क्या होगा? Prices will actually go up. And when prices will actually go up, what will happen? Inflation will happen, right? So there is a spiral which will come into place. That higher expectation of food price, higher expectation of inflation means that households will demand more and more wages, means cost of production will increase, means actually prices will increase, means inflation will come, right? So that's what is the idea over here. That जो households का perception है about inflation, that is dependent upon food and fuel. तो अगर आपने फूड को निकाल के बाहर फेंक दिया एंड फूड को प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं करा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाउस होल्ड विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग हायर एंड हायर इन्फ्लेशन, मीनिंग कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन विल बिकम अनएंकर्ड. एंकर क्या करता है? आपकी शिप को स्टेडी होल्ड करके रखता है, राइट? आपकी शिप को यहाँ वहां जंप नहीं मारने देता है. उसी प्रकार से हाउस होल्ड्स की अगर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग इन्फ्लेशन अनएंकर हो जाती है,
So household will start thinking anything that inflation kitna bhi upar ja sakta hai, etc., and then that will cause real problems, like I explained, right? So the moment their expectation of inflation is there, prices will actually increase, right? And that will be a nightmare for any central bank. I hope आपको समझ में आया, and I hope आपको मजा आ रहा है, right? तो जैसे ही ये स्टार्ट होएगा तो इसको सेकेंड राउंड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे कि फूड प्राइस इंक्रीज हुए, उसकी वजह से वेजेस इंक्रीज हुई, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुए, उसकी वजह से वापस से जो है साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? सो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट अगर फूड इन्फ्लेशन टेम्पररी होता, अगर फूड इन्फ्लेशन विदाउट स्पिल ओवर्स होता, वी कुड हैव इग्नोर्ड फूड इन्फ्लेशन. Neither food inflation is temporary in India, nor is it without spillovers, right? So the idea over here is that wage price link hai, which I have already explained to you. How they are interlinked, I have explained to you. And these are the second round effects that we need to be extremely worried about. What is the conclusion? The conclusion is that, see, RBI is very smart. RBI is an intellectual organization. They know the Indian economy better than any single economist knows the Indian economy, right? What is the primary argument that you should exclude food prices? What is the primary argument? Primary argument is that we will have flexibility, right? That food prices को वैसे भी RBI कुछ कर नहीं सकता है, so there is no point on having food prices in monetary policy, right? RBI की खुद की रिसर्च, RBI की खुद की रिसर्च ये बताती है कि 90% ऑफ फूड इन्फ्लेशन जो है इट इज कॉज्ड बाय सप्लाई साइड फैक्टर्स सच एज पुअर वेदर, सप्लाई डिस्टर्बेंसेस, इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशंस, एंड 10% फूड इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय डिमांड साइड फैक्टर्स, राइट? यानी कि कुछ ना कुछ रोल आरबीआई पक्का प्ले कर सकती है. एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द एंटायर डिस्कशन दैट यू मस्ट नोट डाउन, राइट? कि द challenge around food inflation is these three paradoxes. First paradox is, right, कि food inflation transitory है. हमें मालूम है food prices will go up but they will come down. They will go up but they will come down. Yet we cannot ignore them because जब food prices ऊपर जाते हैं तो उसकी वजह से अन्य prices भी ऊपर जा सकते हैं, and you can see a generalization or a general increase in the level of prices. That is very much possible. Point number one. Point number two, right, भले ही फूड इन्फ्लेशन सप्लाई ड्रिवन है, भले ही फूड इन्फ्लेशन सप्लाई ड्रिवन है, लेकिन उसके अंदर एक डिमांड का या फिर एक साइक्लिकल कंपोनेंट होता है, राइट? सो वी कैन नॉट इग्नोर दैट. थर्ड पैराडॉक्स इज, राइट, कि फूड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर इन्फ्लेशन, येट फूड इन्फ्लेशन विल डिटरमाइन हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस व्हिच विल इन टर्न डिटरमाइन कोर इन्फ्लेशन. So these are the paradoxes जिसकी वजह से both sides of the argument, first side of the argument which says that remove food from inflation targeting framework, second side of the argument says don't remove it, दोनों side of the arguments are very strong, right? So what is the conclusion? Conclusion is that food inflation cannot be ignored in India, but at the same time food inflation cannot be given central importance in India. This is the most beautiful aspect, right? Solution क्या है? Flexible situation driven approach. कि 2021 के अंदर ग्रोथ वाज द पैरामाउंट कंसिडरेशन, सो फूड प्राइसेस वर इग्नोर्ड, राइट? राइट नाउ ग्रोथ इज गुड, सो फूड प्राइसेस को कंट्रोल के अंदर लेकर आने के लिए साम दाम दंड भेद इज बीइंग डन, एंड दैट इज द एंड कंक्लूजन. आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क. ठीक है? सेकंड आर्टिकल इज आल्सो रिलेटेड विद दिस. I will quickly jump to the second part of the second article, which is the most important part over here, right? कि इंडिया के अंदर, right, इंडिया के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, राइट? एंड इफ यू स्टॉप फोकसिंग अपॉन फूड प्राइसेस, इफ यू डोंट मॉनिटर एसेंशियल आइटम्स का प्राइसेस, देन इन्फ्लेशन विल बिकम अनहुक्ड, इन्फ्लेशन विल बिकम अनएंकर्ड. उसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज या उसका बिगेस्ट प्रॉब्लम विल बी फेस्ड बाय द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, राइट? जिनके पास सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर ही फूड के ऊपर होता है. यू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगल्स लॉ व्हिच सेज दैट जो पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दे स्पेंड द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर और देयर इनकम्स ऑन फूड आइटम्स बिकॉज दैट्स द बेसिक नीड्स, राइट? उसके बाद सेकेंडली व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू नो if there is inflation in the economy, then you know that borrowers will benefit and lenders and savers will lose, right? We don't want this, right? So this is something that I can explain to you, but this will take my discussion in a completely different tangential direction, right? So how is it that borrowers benefit when inflation is there? So let us say you have borrowed 100 rupees and you are going to repay 110 rupees at the end of 1 year, but inflation is there
of 15%, which makes 100 rupees of 1 year ago, right? And you require 115 rupees for purchasing the same amount of commodity, right? So what happened? You have borrowed 100 rupees and you are going to pay 10 rupees interest at the end of the year, but inflation 15% tha. So whatever you could purchase with 100 rupees, now you need to pay 115 rupees to purchase the same item. ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो रीपेमेंट है उसका वैल्यू इज लेस, right? So earlier your 100 rupees that you borrowed could buy what 100 rupees could borrow. Now the 110 that rupees that you have repaid cannot borrow what the previous 100 was borrowing, right? So previous 100 की borrowing के लिए आज के दिन you need 115. So what has happened? That borrowers have benefited because उनका जो real repayment है उसका purchasing power is less, and who has lost? Lenders have lost, right? Why? Because जो उन्होंने repayment collect करा है उसका purchasing power कम है, ठीक है? Savers have lost. Why? Because if you are putting your money into debt or FDs and RDs, then you will obviously be losing because of inflation. You get negative returns. ठीक है? So these are difficult things to understand, but I am trying to make you understand. If there is any doubt, please feel free to ask. ठीक है? So this is the basic idea. So the conclusion again is very simple and straightforward. That देखो good governance पे ध्यान दो, right? RBI should focus on good. Government of India should focus on good governance. They should support RBI in bringing prices under control. Government should exercise fiscal restraints so that you know our prices remain under control, and we should stick to our retail targets. We should not lose focus upon our food items. That's the basic conclusion. So ये दो articles जो मैंने आपको बताए हैं, these articles are more than sufficient when it comes to understanding and answering all questions around food inflation in India, whether we should ignore or not ignore, right? Now let us talk about Chinese investments. ठीक है? So please understand that the debate is that should we involve FDI from China or not? Should we invite FDI from China or not? That is the debate that we are doing over here. ठीक है? Now please understand, इंडिया के अंदर 21-22 के अंदर we got FDI of $84 billion from the entire world, which got reduced to $44 billion in now in 23-24. This is very bad, right? Because we need constantly good amount of FDI coming into India that will help us in establishing manufacturing, that will help us in increasing production, increasing GDP, increasing growth, increasing jobs, increasing exports from India. That is point number one. If you look at net FDI, so you know that investment can come into India, investment can go out of India. So what is coming into India minus what is going out of India, that is your net FDI. Okay? So net FDI is only $11 billion, right? So that is a 17-year low, and this is again not very good. Government का target है to attract $100 billion of investment every year. We are nowhere near that target, right? तो आज भी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वी नीड अ हाई इन्वेस्टमेंट रेट टू सस्टेन अ हाई ग्रोथ रेट सो दैट वी कैन क्रिएट जॉब्स एटसेट्रा इन आवर कंट्री, बट हमारा इन्वेस्टमेंट आज भी डोमेस्टिक सेविंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू आवर कंट्री, जितना हमें चाहिए, जितना हम चाहते हैं. एडवांटेज ऑफ एफडीआई इज नॉट जस्ट कि पैसा आ जाएगा, बट नो हाउ आएगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आएगी, एज वेल एज मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस आएगी. These are all the advantages that will come along with FDI, right? इंडिया का ह्यूमन कैपिटल भी इंप्रूव होएगा, राइट? इंडिया की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव होएगा if we are able to attract FDI into our country. These are all the advantages that we will get by attracting FDI into our country. ठीक है? अब अगर आप एवरेज इनफ्लो देखेंगे, राइट? सो वी हैव बीन अट्रैक्टिंग अराउंड $70 billion का FDI, बट द नीड इज $100 billion FDI, राइट? तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू डू एवरीथिंग दैट वी कैन डू टू गेट दिस $100 billion इनटू आवर कंट्री, एंड इवन इफ दैट मींस वी हैव टू अट्रैक्ट इट फ्रॉम चाइना, आई डोंट थिंक दैट वी शुड शाई अवे फ्रॉम इट. व्हाई वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ चाइना इज बिकॉज देखिए दोस्तों, चाइना जो है, it is one of the largest contributors of FDI across the world. Last year उन्होंने $148 billion बाहर भेजा था in the form of FDI. चाइना के पास massive savings है, massive investable surplus है, and they can do it, right? अब प्रॉब्लम क्या हो गई इंडिया के अंदर कि चाइना एंड इंडिया शेयर अ बॉर्डर. इंडिया और चाइना ने गलवान के अंदर जो है आपस में क्लैश कर लिए, राइट? एंड उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took this decision through press note 3 that we will restrict FDI from China.
सो केस बाय केस बेसिस के ऊपर कीपिंग इन माइंड नेशनल सिक्योरिटी हम लोग एफडीआई अप्रूव कर रहे हैं या नहीं अप्रूव कर रहे हैं। एंड बेसिक मतलब ये है कि हम एफडीआई अप्रूव नहीं कर रहे हैं फ्रॉम चाइना। जो 526 प्रपोजल मिले थे 11.6 बिलियन डॉलर एफडीआई के, आउट ऑफ देम 201 वर रिजेक्टेड एंड 200 आर स्टिल पेंडिंग। इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिक्स, राइट, सो फ्रॉम 2000 डाउनवर्ड्स इंडिया ने केवल 2.5 बिलियन डॉलर्स का चाइनीज एफडीआई अप्रूव करा है और उसके ऊपर आने ही नहीं दिया है, राइट। प्रॉब्लम है इसकी, एफडीआई को तो हमने रोक लिया है, ट्रेड को हम रोक नहीं सकते हैं, राइट। तो जो हमारी ट्रेड थी, राइट, वो 2001 के अंदर बैलेंस्ड ट्रेड थी, लेकिन अब जो हमारी ट्रेड है उसके अंदर वी आर रनिंग अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड का जो कैगर है, यानी कि जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, दैट इज फैंटास्टिक 17%। तो बायलैटरल ट्रेड बढ़ती जा रही है, वो इंडिया के अगेंस्ट है। हम दुनिया भर का इंपोर्ट चाइना से कर रहे हैं, लेकिन हम चाइना से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं होने देंगे, राइट। अब इंडिया ने जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर देख लिया, सारे स्टेप्स लेकर देख लिए, लेकिन चाइना से इंपोर्ट आना बंद हो ही नहीं रहा है, कोई भी हालत में बंद नहीं हो रहा है। इसका सोल्यूशन एक ये हो सकता है दैट रादर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, अट्रैक्ट एफडीआई फ्रॉम चाइना, राइट, एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन इंडिया यूजिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। चाइना से इंपोर्ट काफी कम हो जाएगा, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी कम हो जाएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल्स, एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमारे को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट भी हमारे कंट्री के अंदर आ जाएगा, एंड दैट विल डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड फॉर अस, राइट। नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज कि ना केवल हमारे सेक्टर्स में पैसा आ जाएगा, जॉब आ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, बट वी विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। We will be able to increase competitiveness, we will be able to increase exports from our country, right? चाइना से बचना या चाइना से इवेड करना या चाइना से अपने आप को दूर रखना इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज क्रूशियल इंडस्ट्रीज के अंदर सच एज फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, सोलर एनर्जी, ईवी, क्रूशियल इंडस्ट्रीज के अंदर वी आर क्रिटिकली डिपेंडेंट अपॉन चाइनीज रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस स्टोरीज है, राइट, उसमें भी चाइना का हाथ है। फॉर एग्जाम्पल, we are very proud of this domestic iPhone assembly that we are doing, correct? We are very proud of this. इसके अंदर जो टाटास के साथ जो वेंडर्स इन्वॉल्व है एप्पल के, they are having Chinese connections, right? So it's not just the Tatas who are assembling it, it is also the Chinese connection that is enabling us to do this. MG Motors, जो कि एक Chinese company है, they have sold 38% of their shares to JSW, which is an Indian business group, right? So already examples are there, already dependence is there, already import is happening, right? So why can't we take a compartmentalized approach and say that trade, investment, culture and scientific exchange, they will be in one bucket, and border issues, geopolitical issues and strategic issues will be in another bucket, right? So the point over here is that China अपने आप में एक $7 trillion का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर उसको हम यहाँ पर बैठकर सर्विस दे सके तो व्हाई नॉट, राइट? अगर हम लोग दोनों आपस में ट्रेड कर सके और डॉलर करेंसी को यूज करना बंद कर सके तो व्हाई नॉट, राइट? सो द कंक्लूजन इज दैट व्हाई शुड वी नॉट टेक अ हार्ड हेडेड, ओपन आइड, नुआंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स चाइना, राइट? व्हाई शुड वी नॉट look at China also through economic and socio-cultural lens apart from military and security lens is the question. And ultimately there are 3 billion people who are staying next to each other. Till how long will we not interact with each other openly, freely, fairly, without any fear, without any problems, right? So these are my 3 articles that I wanted to discuss with you. I unfortunately couldn't discuss in the morning session. I've discussed it now with you guys. I hope you have learned something new. Please write these answers on your own based upon this discussion. Practice is the only thing that will make you clear this examination. Keep that in mind. I will see you all again tomorrow in morning at 7:35 a.m. Please join for 7th August ka discussion in tomorrow's lecture. Thank you so much. All the best and Jai Hind to all of you. Bye bye. Take care.